On the evening of October 26th, Pakistan Rangers had resorted to unprovoked firing along the Indo-Pak international border in Jammu. In response, the BSF troops have retaliated to the firing, and subsequently Pak Rangers extended their firing to target our adjacent POPs, prompting retaliation from our forward defence posts in these areas in a befitting manner. Apart from this, there are people, of course, who have spoken about their ordeal. But meanwhile, my colleague Ajay Jandal has brought some exclusive inputs on this development that has taken place in Jammu. Let's take a look at them. It's late midnight and we have reached here in the Arnia hospital where staff is on the alert. You could see that a number of ambulances have been parked over here, and they have been told to be here, especially to deal with such situation here on the international border, because for last almost 5 hours continuous firing is taking place when Pakistan is violating ceasefire and targeting the civilians. And this this is the major challenge for this health department staff, because this Arnia hospital is in the Arnia town, which is on the target. And even in the previous times, whenever firing took place, they were the people, they were the health department staff who have served in the tough situation, because in this location also there was number of shells which landed, but even after that threat they served the people during the tough time. And this is another challenge when because they are also on the target of the Pakistan shelling, because that area comes under the shelling range. So that is the major challenge. Let's speak to the people over here, doctors over here. डॉक्टर साहब, किस तरह का चैलेंज मैं देख रहा हूँ, पूरा स्टाफ आपका रात को 12 बजे जाग रहा है, अभी तक कितने पेशेंट आए हैं और किस तरह की तैयारी है? सर, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. ये हमारा 2016 से हम लोग, आप भी हमारे साथ ही थे, 2016 से हम ये चीजें देखते आ रहे हैं. तो ये था कि दिस इज ऑल ऑफ सडन एवरीथिंग वाज नॉर्मल. तो लोग जो थे, बाजार खुले हुए थे, सब कुछ था, और एज आई गॉट द इन्फॉर्मेशन कि भाई फायरिंग शुरू होने लगी है, तो इमीडिएटली आई कॉल्ड अप माय मैन्स. ही केम फ्रॉम रूपनगर, ही केम फ्रॉम कजवानी. सो ऑल माई टीम्स वेर एवर दे आर, तो वहीं से अपने घरों से यहाँ पहुंचे हैं. और जैसे हम यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले हमने देखा कि बीएसएफ के जवान को इंजरी हुई है, स्प्लिंटर इंजरी हुई थी. उसको इमीडिएटली हमने फर्स्ट एड देकर उसको जीएमसी पहुंचाया. उसके बाद वी गॉट अ कॉल फ्रॉम अर्निया वार्ड नंबर 5. एक घर में शेल गिर गया था जहाँ पे लेडी इंजर्ड हो गई थी, तो उसको निकाला. इट वॉज अ चैलेंज फॉर अस. तो उस टाइम भी ये हमारे सोहनलाल जी हैं, राकेश जी हैं और हमारे ड्राइवर इनके साथ, दे वेंट देयर. तो वो जो पेशेंट वहां पे ब्लीड कर रहा था, स्टक कर गया था, उसको शेलिंग के दौरान मेरी टीम ने वहां से उठा के लाया, विच इज वेरी गुड फॉर अस. और ऐसी टीम, ऐसी हेल्थ वर्कर्स, इट दे आर वेरी रेयर कि जो अपनी जान, पता है शेल गिर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है. इन दैट केस द पेशेंट वॉज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. तो एक ये था कि ये बड़ा अच्छा, इन्होंने हमारा अच्छा काम किया. दैट्स व्हाई आई वांट टू टेक देयर नेम्स. ये जो लोग इंजर हुए हैं, इनको अब कहाँ शिफ्ट किया गया है? और क्योंकि ये एरिया जो है फायरिंग की जद में आता है, तो ये भी डर रहता होगा कि यहाँ पे भी शेल गिर सके, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है पीछे काफी मोटार शेल गिरे थे. जी देखो, मिस टाइम अगर आप देखिए तो 70% ऑफ द अर्निया इज एम्प्टी नाउ, लेकिन स्टिल जो हमारी मेडिकल टीम है वही आपको यहाँ पर बैठी हुई मिल रही है. तो लोग तो जो भी इंजर्ड हमारे पास आए थे, उनको फर्स्ट एड देके हमने जीएमसी शिफ्ट करवाया है. इसके अलावा जो मेरी टीम है वो भी यहीं पे है. हमें बीएमओ बिश्ना डॉक्टर शमीम अहमद का बहुत अच्छा बैकअप मिल रहा है. सीएमओ जम्मू डॉक्टर हरबख्श सिंह का बड़ा अच्छा हमें बैकअप मिला हुआ है. 108 एम्बुलेंसेज का भी आई वांट टू से थैंक्स टू देम कि हमारे पास 3 108 एम्बुलेंस. वी टोटली हैव 6 एम्बुलेंसेज नो हियर एट अ बैकअप. तो एक हमारा हेल्थ की तरफ से हम पूरी तरह से रेडी हैं. जब आप इस लेडी को घर से निकालने के लिए डर तो लग रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे शेल नहीं गिरा था? नहीं, हम लोकल हैं, डरते नहीं. हम वो डर निकल गया. वो 2014 से अब 23 आ गया. तो नुकसान हुआ है उनके घर पे? हाँ हुआ है, हमने देखा नुकसान हुआ है. हम गए थे दोनों भाई, लेके आ गए उनको. कोई ऐसा कुछ नहीं. दिस इज द कैजुअलिटी रूम एंड वेयर दे हैव ट्रीटेड दिस पेशेंट came for the treatment over here, and after the first aid to the patients, they have been shifted. Both the patients have been shifted to the government medical college for the treatment. And सभी सर दवाइयाँ आपके पास अवेलेबल है? हाँ, यहाँ ड्रग स्टोर इवन डिस्पेंसरी हमारी उस साइड है, ड्रग स्टोर है. यहाँ वेरी गुड वार्ड इवन. तो हमारे ट्रीटमेंट में या हमारी इधर से फर्स्ट एड देने में तो शिफ्ट इसलिए किया जा रहा है कि कहीं
रब ना करे अगर यहाँ शेलिंग हो जाए तो नुकसान। नहीं सर, not that was not the reason for shifting. Reason ये था कि 2 पेशेंट थे तो उनको splinter injury थी, splinter was inside. That need a surgical opinion immediately. So that was the reason we shift the patient to GMC. So you could see they clearly says that we we are not scared because this is the spirit among the health workers over here in the hospital in Arnia when Pakistan is targeting the civilians and especially in the Arnia town, number of shell have landed. So that is the spirit what basically gives the strength to us as well, those who are covering the Arnia shelling from the Pakistan side. With Bunty NewsX, Arnia. Wherever you go in the Arnia sector border area, you will find these kind of shells which is being fired from Pakistan side, and these are the 61 mm mortar shell which continuously is used by the Pakistan to target the civilians over here. And this is one of a location where this shell basically have landed, and this basically created damage over here. And one lady, Rajni Bala, who was there inside her room, she was injured in that shell. Just see that these steel iron steel doors are damaged and it is bent inside, and that is the reason that she was injured in that heavy shelling. These are the marks of the splinters which spread right after this explosion took place, because mortar shell have landed here at around 9:45, and immediately after that landed here, that splinter spreads everywhere, and that caused damage to the house and the machinery over here. Tractor is damaged. One the cattle also injured in that Pakistan shelling. That indicates that how tough time they have faced during the intense shelling of Pakistan, because our sources are saying that more than 100 shells was fired from across the international border from the Pakistan side, which was basically aiming at targeting the civilians over here. This tractor was parked over here, and that is also damaged because of the Pakistan shelling. Let's speak to the civilians over here, what they have to say and how tough time they have faced because of the intense shelling. Because now police and the civil administration, they also have reached the spot to assess that what kind of damage, what kind of losses people have faced during the intense shelling, because almost it was on for 7 to 8 hours. So that is why that they have to see the civilians damage has to be seen so that they can be compensated accordingly in this area. Let's speak to the civilians, locals over here, that what they have to say. क्या हुआ था रात को और कितना मुश्किल था उस वक्त यहाँ से यहाँ रहना, क्योंकि आपके घर में एक महिला जो है जख्मी भी हुई है। सर इतना मुश्किल था, सब लोगों को भागना पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 11 बजे की 11 आए, मोटार शैल सीधे 8 बजे से शुरू फायरिंग हो गई थी सुबह शाम को, तो उसके बाद लोगों को भागना इतना मुश्किल था कि घर से निकलना बहुत मुश्किल था। यह आपने इसका रिजल्ट देखा कि इधर मोटार शैल बना, एक लड़की को बेचारी नींद दूर हो गई, तो घर में सुपना भी कहा था। तो फिर रात को कैसे उनको निकाला यहाँ से? वो एम्बुलेंस लाई थी, वो अपने पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाई थी, उन्होंने गाड़ी को इससे निकाल के उसको रेस्क्यू किया। So during the shelling, what basically civilian could do that they are only dependent on the security forces, police. Basically, they round the clock was here in the near sector to ensure that if any anybody got hurt because of the Pakistan shelling, they have to evacuate them and then help them to reach hospital, or they have to shift them to the safer location. So this was the situation last late night, and we are reporting continuously and showing the world that how Pakistan is started doing inhuman acts over here in the international border and started targeting the civilians in Jammu's Arnia sector area. With Banditi Rajajan, NewsX, Jammu. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.